So we started with limit of a function yesterday, right? Yes, sir. Yeah. So today we will continue with the same, and we will learn how to find limit of a function using the definition of a limit, epsilon delta definition of a limit. So this whiteboard is visible to everyone? Yes, sir. Yeah. Okay, fine. Limit of a function. So what was the definition of limit of a function? C belongs to R be a cluster point or limit point of A for a function Yes. f to a real number that is said to be limit point f at C. If for any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus L is less than epsilon. Yes. So this is the definition that if A is any subset of real numbers and C is any closure point of A, then a function with domain A is said to have limit L at f equal to at C at point C if for each epsilon greater than 0 we are able to find some delta greater than 0 such that if I pick any x which belongs to A and the distance of that x from point C is at most delta, then the image of the function is at distance epsilon from L, right? This is the definition of a limit, that is limit x tends to C fx is equal to L if and only if for each epsilon greater than 0 we are able to find some delta, so we will be able, so there exists some delta greater than 0 such that x belonging to A and 0 less than x minus C less than delta implies fx minus L is less than epsilon. That is, we can write this statement as x belonging to V delta neighborhood of C intersection A, because this means that x belongs to delta neighborhood of C and this means x belongs to A. Okay, and x not equal to C will imply that fx belongs to epsilon neighborhood of L, right? Yes, sir. This was the definition of a limit. So first we are going to prove a theorem, uniqueness of limit. If so, what it says that if the limit exists, then it should be unique. If limit at a point exists, then it should be unique, right? So Yes, how you sir. are going to prove this? कैसे prove करोगे? If we have to show that this is unique, so how to start? सर हम दो अलग अलग लिमिट कंसीडर कर लेंगे और फिर Yes, दिखाएंगे we दोनों will इक्वल है. assume. Yes, we will assume that the function has two different limits, say L1 and L2 at point C, and then we will somehow we will try to arrive at a contradiction, right? So because we have to show that if C is a cluster point and f can have only one limit, so it may be possible that it may not have limit at that point, but if the limit exists, then it should be unique. Okay, if the limit exists, it should be unique. So that we have to, so we will assume, to suppose if possible limits say L1 and L2 at C. Okay, that is limit x tends to C fx is equal to L1 and limit x tends to C fx is also equal to L2. So we have two different limits at point C. What does it imply?
अब सर, हम अगर have to find some contradiction, so क्या करेंगे उसके लिए? सर अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हमें दो ऐसे डेल्टा मिलेंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, सच दैट एफ एक्स माइनस L1 जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा अगर x माइनस सी जो है वो डेल्टा 1 से छोटा है, और एफ एक्स माइनस L2 वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा अगर x माइनस ए जो है वो डेल्टा 2 से छोटा है। हाँ, right. But ये यहाँ पे because we want to somehow get contradiction, so we have to choose our epsilon. तो जो सबसे obvious epsilon लगता है वो कौन सा ले सकते हैं हम? एप्सिलॉन बाय 2 In terms of L1 and L2 क्या लेना चाहिए हमें? half Yes. times L1 minus L2. L1 L1 minus L2. L2 इन दोनों क्योंकि they are not equal, ठीक है, so there it is definitely greater than 0. So सबसे obvious चीज होती है इस तरह से कुछ लेने का नंबर. अगर दो अनइक्वल चीज ली है तो उनका जो है डिफरेंस को we can take as the epsilon. So this is definitely positive since L1 is not equal to L2 by our assumption, right? So this is positive. So half of L1 minus L2. So this now for above epsilon, since Sir, yes, the screen is visible नहीं है. the screen is not Yes, visible. Yes, screen is sir. not visible Yes, sir, it is जो not आप लिख visible. रहे हैं वो everyone. सर नीट से आया हुआ है. It's a freezing. Okay, let me share it. Let me reshare it. So is it clearly visible now? No, sir. No, sir. नो सर। Still it is not. Okay. So maybe some internet issue or what? So now it's visible. Let me try to join. Okay. To everyone, this is visible now? No, sir, it's not No, visible. sir. Yes, sir. Yes, sir, now it's visible. Okay, fine. So now it's visible. Okay. So we will take epsilon equal to this. ये तुम लिमिट में भी करते होगे जब यूनिकनेस ऑफ लिमिट प्रूव करते हो, राइट? वहां पे भी सेम एप्सिलॉन लेते हो, रिमेंबर? अगर सीक्वेंस की यूनिकनेस लिमिट करी हो कि एक सीक्वेंस की दो डिफरेंट लिमिट्स नहीं हो सकती, सो वहां पे भी वी यूज दिस एप्सिलॉन ओनली, राइट? सो यहाँ पे भी द सेम एप्सिलॉन वर्क्स. सो वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू जो भी तुमने सीक्वेंस में काम करा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिपीटेड हियर. ओके, तो वहां की ट्रिक्स सारी याद रखना बिकॉज वो सारी चीज हम यहाँ पे लेते रहेंगे. सो दिस एप्सिलॉन ये हम वहां पे भी ऐसे ही लेते थे कि दो डिफरेंट लिमिट्स लिया तो उनका डिफरेंस ले लिया, एंड because of we don't know which one is greater than which one is positive, which one is greater, so that's why we are taking this mod so that our epsilon is always strictly greater than 0, right? Now since limit x tends to c fx is equal to L1 and limit x tends to c fx is equal to L2, so for above epsilon greater than 0, so for above epsilon there exists delta 1 corresponding to this limit and delta 2 corresponding to this limit. So there exists delta 1, delta 2 greater than 0 such. So we are having this delta 1 is corresponding to this and this delta 2 is corresponding to this limit, such that what we will have fx minus L1 is less than epsilon and fx minus L2 is less than epsilon. This is whenever x belongs to A and 0 is less than x minus c less than delta 1 whenever x belongs to A and 0 is less than x minus c less than Sir, screen delta lag 2. Now what next we should do? Just lagging, maybe some internet issue. सर स्क्रीन लैग कर रही है सर.
So let me rejoin again then in that case. What can I do? Is it better now? Yes, sir. Okay, let me write something, then you might, if there is any lag or not. So this is our star, right? So now what we should do? अब हमारे पास एक डेल्टा 1 है, एक डेल्टा 2 है. So what should we do? अरे इनका मिनिमम ले लेंगे, एक Yes. नया डेल्टा लेंगे, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 को डेल्टा मान लेंगे. Yes, we will take let, जो हम हमेशा करते आते हैं, delta equal to minimum of delta 1 and delta 2. Then what we will have, these two conditions will hold for the same delta, right? Then fx minus L1 is less than epsilon and fx lag कर minus रहा है L2 is less than epsilon. Sir, सर अभी भी Okay. लैग कर रहा है. sir, Okay, lagging. okay, let me leave and then let me rejoin in that case. Okay, so I've rejoined. Let's see if it is still lagging. So whenever n belongs to A, सर इट्स and ब्लैक. Sir, it's It's not black visible. screen. it's not visible. So what is happening today? It's visible. Now is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this fx minus L1 and these two conditions will hold for the same delta, right? 0 less than minus c less than delta. Is it fine? This statement? Yes sir. Okay, so now what next we should do? फिर L1 माइनस L2 का मॉड बाय 2 कंसीडर कर लेंगे. We will start with L1 minus L2. So consider mod L1 minus L2. So now we have to bring this fx because we have to use this double star. So how to bring that fx? We will add and subtract, right? Subtract. The screen is not visible Yes. properly. Okay, let me restart and rejoin. Okay. Okay, so I am back now. So screen is visible to everyone. Yes sir. Okay, fine. It's visible. So- It's visible. Okay, so we were doing this uniqueness of limit, right? So we started with two different limits, L1 and L2, and then we took epsilon equal to half of L1 minus L2 because we have assumed that L1 is not equal to L2. So this number is positive number, so we can take epsilon equal to this. Now since limit is this, so for this epsilon, for this corresponding to this epsilon, we will have two different lambdas or deltas, delta 1 and delta 2, such that fx minus L1 is less than epsilon whenever your x belongs to A and 0 is less than x minus c less than delta 1, and also fx minus L2 is less than epsilon whenever your x belongs to A and 0 is less than x minus c less than delta 2. Now because we want these two conditions to hold for the same delta, so for that we have to choose delta equal to minimum of delta 1 and delta 2. Now for this delta, the two conditions hold together. Okay, so this is true for all x such that 0 is less than x minus c less than delta. Fine. So now we started with L1 minus L2 because we will show that this comes out to be this. We will arrive at some contradiction due to this. So we started with L1 minus L2. Now because we have to use this condition, this double star, so we have to somehow bring fx in the picture, and to do that what we do, we add and subtract fx here. So we have added and subtracted fx.
Now we will use triangle inequality. So using triangle inequality, we will have this, right? Is it fine? So using Yes, sir. triangle inequality. So by triangle inequality this, and now we can use our double star. So this is less than epsilon, this is less than epsilon. So which is equal to, using double star, so which is equal to 2 epsilon, which is equal to 2 into 1 by 2 L1 minus L2, so which is L1 minus L2. So thus L1 minus L2 is strictly less than L1 minus L2. Is it possible? No, No, sir. sir. Which is a contradiction, right? Yes, sir. Which is a contradiction. Hence our assumption is wrong and the limit of a function is unique if it exists. So limit is unique if it exists. Fine? Sir, Yes. sir, can we take epsilon equals to L1 plus L2 by 2? No, L1 plus L2 by 2 will not give you anything. Okay. Yes, sir. The difference, because we will get this, because we will get the relation due to this, right? Because we have to use this, so somehow we have to use this. So to use this, we have to take this form. So we will get our contradiction in this form only. So L1 minus L2. If you will take epsilon equal to L1 plus L2 by 2, then you may not get any contradiction. Yes, sir. Because then that epsilon can be very large, and for large epsilon sometimes any delta will work. Okay, so generally in limits this problem comes when epsilon is very small. If epsilon is large, then there will be some delta which will work, like in the yesterday when I was showing you this example. If you would have seen, so when I was showing you this example, suppose this is our function. Okay, so this is our C, right? So this will be the limit of the function, right, at this point. So this will be the limit of the function. But if I will take L1 here, okay, so if I will take this epsilon, if I will take this much epsilon, L1 minus epsilon, and L2 L1 plus epsilon, so for this much large epsilon, I will be able to find some neighborhood around C such that this will lie in this interval, right? So this will be somewhere here. So this is here, this is here. So it will lie in this region, right? It is lying in this region. So it is lying in the interval. So our epsilon should be very small. It should be something like this. If I will take this epsilon, then it won't work. Then I won't be able to find a neighborhood around C for which the image will lie in this interval, right? So generally in limit, the problem comes when epsilon is very small. If you take epsilon equal to L1 plus L2 by 2, right? This is the epsilon you are talking about. Yes, sir. Yes. So suppose you are talking about this epsilon. So this might be very large epsilon. Okay. So for this epsilon, you may be able to find some delta. So generally, because when we are talking about difference, so difference this becomes very small. So if we take half of this, it will be very small, and it works in our case. Okay. Yes, sir. And you can manipulate L1 minus L2, but you can't manipulate L1 plus L2 in terms of L1 minus L2. Okay. सर इसे L1 is equal to L2 भी शो कर सकते थे. हाँ, if we could have started directly with suppose we have two different, but ये लेने से ये फायदा हो जाता है different बोलने से कि पहले से ही clarity लेके चल रहे हैं कि we are taking two different L1. Otherwise हम epsilon ये नहीं ले पाते.
ठीक है। तो तब सर हम हमें यहाँ पे बोल रहे हैं सर, जहाँ पे लेस देन 2 एप्सिलॉन आया ना सर, हाँ उसमें फिर वहां पे अदर वे क्या होता कि वी कुड हैव प्रोसीडेड विद एनी आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर ये सारा जो यहाँ पे हम शो कर देते कि L1 minus L2 is less than epsilon, and since our epsilon is arbitrary, so जो मैंने रिजल्ट बताया था कि if a number is smaller than epsilon for every epsilon, then that number has to be 0. A positive number which is less than epsilon for every epsilon, that number has to be 0. So तब 0 आ जाता। Are you able to understand? देखो इस तरह से प्रोसीड करते हैं। अल्टरनेट प्रूफ ये है। Instead of using contrapositive approach, we could have directly gone and proved this result. So what we would have done, we would have started with this: let L1 and L2 be two limits. So they may be equal, they may not be equal. Two limits of function f at c, that is limit x tends to c fx is equal to L1 and limit x tends to c fx is equal to L2. Now what we could have done is we could have started with any arbitrary epsilon. So let epsilon greater than 0 be any real number. So instead of fixing an epsilon, we could have worked with any arbitrary epsilon. Then by definition of limit, there exists delta 1 delta 2 greater than 0 such that fx minus L1 is less than epsilon by 2 and fx minus L2 is less than epsilon by 2 whenever 0 is less than x minus c less than delta 1 and x belongs to a, and whenever 0 is less than x minus c less than delta 2 and x belongs to a, matlab x is in the domain. So then we could have taken let delta equal to minimum of delta 1 delta 2. So then what we would have this, that fx minus L1 is less than epsilon by 2, fx minus L2 is less than epsilon by 2 whenever x belongs to a and 0 is less than x minus c less than delta. So mark this as star. Now consider, so we start with L1 minus L2 again. So this will be L1 minus fx plus fx minus L2. Then by triangle inequality we will have this, right? And this is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 from our star. So what we get, this implies L1 minus L2 is less than epsilon for all epsilon greater than 0, and this implies, because a positive number which is smaller than epsilon for every epsilon greater than 0, that number has to be 0. So this is equal to 0 since epsilon greater than 0 is arbitrary, right? yes sir. So this implies L1 is equal to L2, hence the limit is unique. So this would have, इस तरह से भी हम प्रोसीड कर सकते थे, कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है? So if you want to approach contrapositive, then you will have to take epsilon equal to this. इसका मतलब 1/3 1/4 कुछ भी ले सकते थे, okay? Or if you would have you wanted to proceed directly, then you could have started like this. So दोनों proof हैं, both are simple proofs. In between सेम ही चीज यूज हो रही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे का लिखने का अलग है, ठीक है? कॉन्सेप्ट यही है कि you will have to consider this, you will have to start with this, और ये हम बहुत जगह करते हैं, not only in this, we will use this at lot of places. Fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So both the techniques you could have applied. किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो फर्स्ट Yes. वाली proof में हमने एप्सिलॉन की मतलब एप्सिलॉन को कैसे निकाला है?
फर्स्ट में देखो, जब भी हमारे पास इस तरह का होता है ना, ये मतलब दिस इज whenever we take some epsilon it is generally by hit and trial method only, मतलब बहुत जिसने फर्स्ट टाइम लिखा होगा उसने उसको प्रूफ करा, मतलब उसने कई चीजें ट्राई करी होंगी। ओके, बट नाउ एक ये भी होता है कि इंट्यूशन आ जाती है आपको कि क्योंकि आपने इतने सारी चीजें कर रखी होती हैं, सो यू गेट एन इंट्यूशन कि वी शुड टेक एप्सिलॉन दिस, देन ओनली वी विल अराइव एट सम कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, सो ये बहुत जगह है, मतलब इट्स नॉट कि वी आर यूजिंग इट हेयर ओनली, ये तुमने कई जगह इस तरह का यूज करा होगा। एप्सिलॉन जब भी हम दो डिफरेंट ऐसे लेते हैं तो जनरली वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, ये कई जगह करते हैं हम, नॉट ओनली एट दिस प्लेस, वी यूज इट एट लॉट ऑफ प्लेसेस। सो जब भी हमें एप्सिलॉन कोई लेते हैं, हम कोई एक फिक्स एप्सिलॉन लेते हैं, सो जनरली देयर इज सम इंट्यूशन देयर, और मतलब इंट्यूशन कैसे आएगी, कुछ लॉजिक से, मतलब कि हमने कई और जगह किसी तरह यूज करा होगा, सो वहां से उस तरह से इंट्यूशन आती है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, अगर तुमने सीक्वेंशियल सीक्वेंस का भी प्रूव करा हो तो उसमें भी इसी तरह से प्रूव करते हो कि यू टेक दिस एप्सिलॉन ओनली। सो इस तरह का एप्सिलॉन बहुत जगह यूज होता है। जब भी इफ यू रिमेंबर, मैं जब भी आई से कि ये टेक्निक तुम और जगह भी यूज करोगे, सो इट मींस कि ये मतलब एप्सिलॉन इस तरह का चूज करोगे और जगह भी, या इस तरह का अप्रोच लगाओगे। जैसे अगर L1 माइनस L2 लग रहे हैं तो ये वी विल यूज दिस अप्रोच एट लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ये इस तरह से स्टार्ट करने का, देन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो ये बहुत जगह यूज होता है सेम चीज। और मैथ्स को अगर देखोगे सिमिलैरिटी से तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि क्या पैटर्न अगर फाइंड करोगे हर एक उसमें, तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है, किसी प्रूफ को कैसे लिखना है, मतलब कोई नया कोई थ्योरम आ गया, इफ यू गेट एनी न्यू थ्योरम, तो हाउ टू टैकल दैट थ्योरम। सो उसको टैकलिंग करने के लिए वी यूज द पैटर्न दैट वी हैव यूज्ड इन आवर प्रीवियस थ्योरम्स। सो उस तरह से देखते हैं कि भाई हमारा इंट्यूशन क्या कहता है कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, राइट? Yes, sir. यस सर। सो इसलिए जब भी तुम कोई प्रूफ लिखते हो, सो जस्ट सी व्हाट पैटर्न यू हैव फॉलोड, कि कोई प्रीवियस किस में और इस तरह से करा था हमने। सो उस तरह से अगर रिलेट करोगे, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू राइट प्रूफ ऑन योर ओन। ओके, देन यू कैन इजीली राइट प्रूफ ऑन योर ओन बिकॉज यू नो हाउ टू राइट प्रूफ्स देन। बट अगर एक थ्योरम को लेके और उस थ्योरम को याद करोगे, देन यू तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थ्योरम्स, देयर विल बी लॉट ऑफ थ्योरम्स। अभी जैसे मैं दिखाऊंगा, अगर चीज ना हम सेम ही रिपीट कर रहे होंगे, सेम ही रिपीट कर रहे होंगे, बट अगर उसे एज अ थ्योरम देखे तो हमने 100 थ्योरम्स कर लिए हैं, ये 100 थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं, 100 थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं। बट अगर कोई टेक्निक देखे तो मे बी यू विल फाइंड दैट कि बस 10 थ्योरम ही की टेक्निक, 10 थ्योरम्स की टेक्निक हम बाकी थ्योरम्स में यूज कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट तुम्हें 10 टेक्निक्स याद करनी होंगी 100 थ्योरम्स याद करने के लिए। बट अगर एज अ थ्योरम तुम याद करोगे तो देन यू विल हैव टू रिमेंबर 100 थ्योरम्स। सो इसलिए टेक्निक को रिमेंबर करो कि टेक्निक उसमें क्यों क्या लगाया था, ये क्यों लिया L1 माइनस L2 हमने। सो ये अगर ये इस तरह से याद रखोगे एंड इसको रिलेट करोगे कि इस थ्योरम में हमने इस तरह से करा था, इसमें इस तरह से क्यों कर रहे हैं, सो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू राइट प्रूफ्स ऑन योर ओन, टू राइट एनीथिंग। ओके, सो जस्ट फाइंड सम पैटर्न, पैटर्न को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हारी 100 थ्योरम्स 10 थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएंगी। कि अगर 10 थ्योरम आ गई, देन यू नो कि यू कैन राइट द प्रूफ्स ऑफ 100 थ्योरम्स। बट अगर खाली एज अ थ्योरम याद कर रहे हो, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 100 थ्योरम्स को याद करना इज नॉट इजी। ओके, सो जैसे अब ये यूनिकनेस वाली चीज है, दिस ये इज नथिंग, दिस इज ओनली, ये चाहे तुम सीक्वेंस लिमिट में कर लो, बाद में और भी जगह देखोगे कि ये थ्योरम हर जगह आएगी, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। और इसका कुछ नहीं है, बेसिक क्राइटेरिया वही है कि भाई लिमिट जो है वो यूनिक होती है। लिमिट जो है सीक्वेंस की लिमिट हो गई या उसकी हो गई, सेम प्रूफ है हर जगह। सीरीज की लिमिट, सीक्वेंस की लिमिट, किसी की भी लिमिट सेम, यही आर्गुमेंट फॉलो होता है। सो अगर एक की यूनिकनेस आ गई तो तब समझ लो तुम्हें सबकी यूनिकनेस आ गई। सबकी यूनिकनेस कैसे प्रूव करनी है, वो इसी तरह से करनी है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर द पैटर्न्स। ये सब करा हुआ है तुमने, ये प्रूफ इस तरह का ये पूरा फॉलो करा हुआ है। ठीक है।
Okay, so we have an equivalent statement for this. ये वैसे तो मैं लिखवा ही चुका हूँ already. So we are not going to. So ये already मैं समझा चुका हूँ this theorem. What it says? That is, it says that limit x tends to c fx is equal to L if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x belonging to V delta neighborhood of C intersection A x not equal to C will imply fx belongs to V epsilon neighborhood of L. Okay, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, that is f of V delta neighborhood of C intersection A after removing point C is contained in FO is contained in V epsilon of L. ठीक है, so this is what it says कि these two statements are equivalent. Fine. Given any epsilon neighborhood, so given any epsilon there exists a delta neighborhood, मतलब कि एक delta exist करता है such that for any point x not equal to C and x belonging to this intersection, then your fx will belong to this epsilon neighborhood of L. Fine. तो कई जगह हम ये वाली स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको लिखा हुआ है बुक में, मतलब क्वेश्चन भी मे बी इट मे कम इन दिस फॉर्म, so you should know that it is equivalent only. Okay, now let us learn how to prove limits. So question, first question, let us take the first question. Show that simple question. Limit x tends to C B is equal to B, where B C are real numbers. So their B is constant. So constant का limit वही आ जाता है. Basically it means this. Limit of a constant is the same point limit. Yes. How to proceed for the proof? So we have to show limit is equal to this. So we will have to start with any arbitrary epsilon, right? So let fx equal to b, so constant function b for every x in R. So we have defined fx like this to show limit x tends to C fx is equal to b. So for this what we will have to do, we will have to start with any epsilon, because we have to start with any epsilon and we have to find some delta greater than 0, right? So we have to start with any epsilon and corresponding to this epsilon we have to find some delta. So delta हम निकालेंगे, epsilon we will take arbitrary. So let epsilon greater than 0 be any arbitrary real number. Okay, so we have started with any epsilon. Now we have to show that this fx minus b is less than epsilon. So we will start with fx minus b. So consider fx minus b. So fx is our b, so this is b minus b, which is 0, which is always less than epsilon. So whatever delta we will take, this is always less than epsilon because it does not depend on delta right now. Either 0 ही आ गया, 0 is always less than epsilon, right? Always true, right? इसमें delta का तो कोई रोल ही नहीं आया अभी. So hence, so for any delta greater than 0, x belonging to A, 0 less than x minus c less than delta implies fx minus b is less than epsilon, क्योंकि वो तो 0 ही है. So it is always less than epsilon. So हमें तो कोई भी डेल्टा काम कर जाएगा, मतलब हमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डेल्टा लेने की जरूरत नहीं है. Any delta will work for this because this is always true. It does not depend on delta. This condition is always true, right? So hence, Yes, sir. limit x tends to c fx is equal to b. That is limit x tends to c b is equal to b. Now let us take another question. Show that limit x tends to 4 x is equal to 4. So this now we have to show. So how to start for this? Let फिर epsilon arbitrary epsilon लेंगे.
Yes, we will start with any arbitrary epsilon. तो पहले fx को denote कर लेते हैं. For every x in R, to show limit x tends to 4, fx is equal to 4. So let epsilon greater than 0 be any real number. Okay. So now what we do? We are starting with any arbitrary epsilon. So consider again we have Mod to of consider this fx mod minus fx 4. minus 4. So this is x minus 4. X minus 4. Okay. So when अब देखो हमें किस फॉर्म में चाहिए, डेल्टा की कंडीशन किस फॉर्म में चाहिए, x minus 4 should be less than delta should imply this fx minus 4 less than epsilon. हमें ये कंडीशन चाहिए, राइट? वी हैव टू प्रूव दिस. हमें एक ऐसा डेल्टा फाइंड करना है सच दैट अगर x minus 4 लेस देन डेल्टा हो तो fx minus 4 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. तो ऐसा कौन सा डेल्टा होगा? ये कब लेस देन एप्सिलॉन होगा? When this is less than epsilon, when this x minus 4 is less than epsilon, right? So delta क्या लें हम? epsilon. Yes. So let delta equal to epsilon greater than 0. Then clearly, या for delta equal इस तरह से लिख सकते हैं. Clearly, for delta equal to epsilon greater than 0, 0 less than x minus 4 less than delta implies fx minus 4 is less than epsilon, because x minus 4 को less than delta मतलब x minus 4 को less than epsilon लिया है, तो this is less than epsilon. So hence, so this implies limit x tends to 4, fx equal to 4. So basically हमारा aim क्या होगा? हमारा aim क्या होगा? We will always have to express fx minus l in terms of some constant times x minus c. इस फॉर्म ये फॉर्म लाना होगा. फिर डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन बाई के, राइट? हमें हमेशा क्या करना होगा? we will have to express this. We will start with fx minus l and we will try to convert it into this form k times x minus c. इस फॉर्म में लाना होगा और फिर डेल्टा we can choose as epsilon by k. Okay, Yes, so this sir. will be our aim while doing this question. So we will start with this fx minus l, ठीक है, and then we will try to convert it into this form k times x minus c. अब देखो हमने यहाँ पे भी x minus c के ये 1 into, so यहाँ पे k हमारा 1 है, so epsilon by 1 आ गया. In general क्योंकि हमें ये less than epsilon लाना होगा, this will be less than epsilon when this x minus c will be less than epsilon by k. So delta जो है वो हम epsilon by k लेंगे. ओके, तो यही हमारा एम होगा हर बार, हर क्वेश्चन में दिस विल बी अवर एम टू एक्सप्रेस fx माइनस सी. सो रिमार्क लिख ही लेते हैं सो दैट यू मे रिमेंबर. टू शो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू l, we will always try to express fx minus l in the form of k times x minus c for some constant k. For some constant k, that is हम fx minus l को इस फॉर्म में लाएंगे, x minus c के फॉर्म में, इस फॉर्म में ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने की. देन आवर डेल्टा विल बी एप्सिलॉन बाई k. और कई बार हम कोई कंडीशन और यूज करते हैं ये फॉर्म लाने के लिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नहीं आती, तो जो भी हम x माइनस सी पे एक्स्ट्रा कंडीशन लगाएंगे तो वो मिनिमम ऑफ दैट आ जाएगा यहाँ पे. Sometimes we may have to use some extra condition of the form
x minus c less than say a to achieve our goal. ठीक है? So then in that case our epsilon will be minimum of a epsilon by k. So जो भी कंडीशन लेंगे, इस तरह की जो भी कंडीशन लेंगे, so our delta will be of this form. मिनिमम जो भी कंडीशंस लेते जा रहे हैं वो हो जाएगा. ठीक है? Yes. Let us do some questions, then you will understand कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. Okay, so we are already, so एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो I want to take some question. Yes, let's take this question. Show that limit x tends to c square, c x square is equal to c square. So this we have to show. So how to start? To show so let epsilon greater than 0 be any real number. Okay, so this we have taken any real number. Now what we will do, we will start with consider fx minus l. So we will start with fx minus c square. अब हमें ये x minus c के फॉर्म का लाना है किसी तरह, k times x minus c, so वो करना है. So this is x square minus c square. What next? X minus c, x plus c. Yes, this is x minus c, x plus c, x minus c, x plus c. Now because see this is in terms of x minus c, so ये तो हो गया, लेकिन ये इसको हमें किसी तरह कांस्टेंट बनाना है. We have to somehow equal to mod x plus c. So we have to somehow bring this. Okay, so एक तो यहाँ पे हम यहाँ पे triangle inequality we can use. So we can use this triangle inequality. Now अब x को किसी तरह remove करना है. So we have to use some condition on x. अगर ये जब भी x हमारा न्यूमरेटर में है, if our x is in the numerator, तब तो सिंपल होता है, you can take this, always you can take this, let x minus c is less than 1. ठीक है? अगर न्यूमरेटर में है तो कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हो, कोई भी 1, 2, हाफ, कुछ भी रख सकते हो. ठीक है? अगर डिनोमिनेटर में होगा देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या लेना है, बट इफ इट इज इन द न्यूमरेटर देन यू कैन ऑलवेज चूज दिस कंडीशन. ओके, यू कैन ऑलवेज टेक दिस कंडीशन, 1 ले सकते हो या कुछ भी. जब भी x अगर तुम्हें न्यूमरेटर में से हटाना है, if you want to remove x from the numerator then you can always have this. So this implies mod x is less than 1 plus mod c, right? ये किससे आता है? रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, क्योंकि रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? mod a minus mod b is less than equal to mod of a minus b, right? Yes. Remember? So इससे आ जाता है. So this we get here by using reverse triangle inequality. ठीक है? So mod x is less than 1 plus c. So now we can use in this. So mark it as star. So using in star we get. So एक condition हमने ले ली है. So fx minus c square is less than, ये जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 plus 2 mod c आ जाएगा, right? Mod x minus c. So this is our case. So what delta we should choose? So then clearly for delta equal to what delta we should choose? क्योंकि एक condition हम already use कर चुके हैं. So 1, this condition we have already used. So 1 Mod c and yeah, this is k. So epsilon by 1 plus 2 mod c. 1 plus 2 mod c. So this will be our delta. Then clearly for delta equal to this, 0 less than x minus c less than delta implies fx minus c square is less than epsilon. Hence limit
x tends to c, fx is equal to c square. Is it fine? Yes, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से. Show that it will be on the similar lines. You can try to prove this on your own. It will be on the similar lines. और इसको भी शो कर लेना in general. ये दो सेम ही क्वेश्चंस है बिल्कुल, बट एक बार नंबर के साथ भी तुम्हें आना चाहिए प्रूव करना, और जनरल भी आना चाहिए. सो ट्राई टू प्रूव दिस टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. सेम लाइंस पे हो जाएगा. ओके. Yes, sir. सो एनी डाउट एनीवन वांट्स टू आस्क? No, sir. No, sir. सो इस अच्छा, ये लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत सारे ट्राई करना, प्रैक्टिस ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करते हुए, बिकॉज मतलब क्वेश्चंस बहुत टाइप के होते हैं. वी वोंट बी एबल टू कवर ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास. सो ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. बुक उठा लो, उसमें से प्रैक्टिस करते रहो. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द बुक. ट्राई टू डू इट. और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी. सो हम उस क्वेश्चन को वी कैन टेक अप, बट आई कैन नॉट डू ऑल क्वेश्चंस इन द क्लास. सो ट्राई टू डू इट. और साथ में I have uploaded solutions of exercise 4.1, 4.2, so all those are there on my YouTube channel, so you can see the solutions there also, okay, how I have done those questions. Okay, but practice all the questions. इस वाले चैप्टर में you need a lot of practice, क्योंकि जो ये एप्सिलॉन चूज करना या डेल्टा चूज करना, that will come with practice. अगर सोचोगे कि एक क्वेश्चन कर लिया बाकी सारे सिमिलर होंगे, so ऐसा नहीं होगा. You will make some mistake in choosing delta, so try to have a lot of practice in this. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so now I am ending this meeting. Bye everyone, have a good day. Thank you, sir. Okay, Thank you. bye everyone.